Yes. So let's discuss first of all what exactly is the cloud computing. What does it means by the Salesforce? Why you are learning the Salesforce? So let's start with the fact that see, whenever we talk about the business automation, that we have automation की बात करते हैं, where when we think of this, that in a certain business process, some of the software, some of the application must be involved in the business process, like to take the decisions of the things what we can see. I mean, the things what we can actually give the profit in the business, and the things what were required to have in a business. So whenever we something, if we talk about like to automate any certain kind of business, it could be related to your pharmaceutical, it could be related to healthcare, it could be related to hospitality, it could be related to banking and the finance. So अभी जैसा कह सके nowadays this is certain thing which is very common to us. I mean, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि probably we have software almost everywhere whenever we go, and whenever we even आप एक shopping mall को भी जाते हैं आज की date पर, you see that these guys actually uses some sort of application inside their computer, and they used to maintain your data also. So now see, applications are everywhere, software is everywhere almost. And this is a very common thing what we see in our day-to-day life. We are very used to of having this. So कैसा होता है कि let's talk about this कि whenever we certainly think about any application in a business, the business which is being supported by any kind of application. So applications are basically, there are two different categories, I could say that in applications falls into the two different categories. Some of them are called as on-premise applications. Some of them are called as on-demand, or rather a cloud application. So in the beginning itself, we must be aware what are the different types of applications that are used for automate any kind of business process. So application, there are two categories of the applications. Everywhere if you go, there are obviously two categories of, these are the two categories of application. Everywhere you see it, So some of them are called as on-premise application, few of them are called as on-demand, or rather on cloud application. Now, what does it means by any on-premise application? What does it means by any cloud application or demand application? Let's understand this as a fact. See, any application, I'm talking about on-premise. So any application which actually requires you to first install it. If I wanted to use any certain application, and if that particular application requires, it should be installed inside my computer, my laptop, or rather my tablet or my mobile, everywhere. If before using the application, it requires a pre-installation, you just need to install the application, and without installing, you cannot use the application. So any such kind of application which actually requires you to first install that, you first need to install it in your device, a local device, what we call. Local means whatever the device you are using. You are using a desktop, you are using a laptop, probably you are using a tablet, you are using a mobile phone, or any other kind of device, whatever you are using. So any such application which actually you require to first install, and then only you can use that, that comes under the category of on-premise or on-device. These are one and same thing. It's a two faces of coin. So you call it to be the on-premise application or on-device application. So abhi tak kaisa hai? Whatever the kind of application, so far probably you have seen, all of them, most of them, not all of them, but most of them are actually on-premise application. Basically, see, every application, whatever you are using inside your mobile phone, mobile phone pe koi bhi application, whatever you are using, probably having any company's mobile, आप probably Android use करते हो, the Apple use करते हो. You first need to install it. Android, usually we go to the Play Store and then we install that application onto the device, and then only we can start using it. But a common sabbat. So the kind of application probably you have seen so far, most of them are actually on-premise application. In case of mobile, in case of the mobile phone, what we are using, every application is on-premise. First of all. In case of like your laptop and the desktop, if probably you have used this Microsoft Office, Word, PowerPoint, Excel, whatever, then you have probably used the, if someone of you is probably from the CSE or rather computer background, if you are doing some sort of coding, like if you are doing the Java, you probably need to install that Java runtime environment. If you are, if you are working for the database, so you probably need to install the Oracle suites, probably Oracle 9, 10, whatever. If you are using, if you are using for a .NET, you even need to install the Microsoft .NET Suite, SQL, whatever. If you are a civil engineer, probably you can install the AutoCAD or some
some other kind of applications, So see everywhere, most of the time whenever you see any application, most of the application they were on-premise application. Why? Because अभी जितने भी मैंने नाम लिए, जितने भी categories के मैंने नाम लिए, these are the application we first need to install it. And you cannot think it like that, even without installing, I can use them. No, it's not possible in the case of on-premise. Case of the on-premise, it is not possible. So every such kind of application that actually requires a pre-installation, that you first need to install it on the device, and then only you're able to use that application. So such kind of applications are called as on-premise application, first of all. Now there are there are actually certain drawbacks. There are certain issues with this kind of application, this kind of software that actually requires a pre-installation. There are so many issues with that. I'm going to discuss that also, but before that, let me tell you the definition, how it's comparatively different. How it's comparatively different from on-premise से on cloud कैसा अलग है? Cloud application क्या होता है basically? Okay. तो ये थोड़ा सा एक comparative study करते हैं, and then we will talk about what are the different, what are the drawbacks over here and what are the advantages over inside an on-cloud application. देखिए, here you need to install it in case of on-premise. Okay. Cloud is a kind of application, any cloud-based application. इसको हम on-demand भी बोलते हैं, on-demand, second word. Actually, but the most popular word is cloud application. Cloud is rather most popular, On-demand भी बोलते हैं लोग, but what I heard more is the cloud application. So any cloud application, it first of all, it doesn't require you to install it. It doesn't require you to install it. So abhi a question immediately, that comes into the mind is that if I cannot, if I don't install it, how can I use that particular software? Because we are more habitual of this, we are more habitual of this first to install and then you use. This is something which actually we are more used to of this, and we have seen the application that we usually first install and then start using the application. Now, if I'm telling you this another theory, and I'm coming up with another kind of application that doesn't require a pre-installation. You can even don't install it, and you can even use that application. How is it possible? How is it at all possible? So see, this is what, first of all, the cloud application, you don't require to install it. So if I wanted to use any such kind of application, which I actually have not installed, how I'm going to use it? So we actually require two things for that. And that is, the first thing is browser, any kind of internet browser like your Mozilla or Firefox, like your Internet Explorer, or could be your Google Chrome, any kind of browser. And second thing is internet. You definitely should have the internet connections. Okay. So these are the two things what you require to access. Only two things. One is a browser. A browser is everywhere, first of all. If I talk about the mobile phone even have the browsers. Or even they facilitate you that you can download this Google Chrome. You can download the light version of Mozilla also. So everywhere, browsers are by default everywhere. And with this, India में कैसे कि अभी internet is also something which we can actually see over. Even if we go to the urban and the rural areas, we everywhere probably we found the internet. थोड़ा speed ऊपर नीचे हो सकता है, probably. But yeah, at least the 80-90% of the country is covered up with the internet. So probably ये भी आज अपनी country में हर जगह available. So what is the minimum requirement to access any cloud application? We should at least have two things, just two things. What is that? So you should have browser. I think browser is everywhere. Browser is available with all kind of devices. Either you are using your mobile, you have browsers on the laptop, you have browsers on the desktop, with the tablets, everywhere. You have this software, you have this application everywhere. And the second thing is what? You require one internet. You require an internet. So any cloud application, let me show you that. Any cloud application, you can just access it with the help of this browser. I just open another tab in the this Google Chrome. If I wanted to access Salesforce, we are learning the Salesforce. I'll tell you every example related to Salesforce. So if I wanted to access the Salesforce, how would I access? I just need to type one of the address. Any URL. See, you do type the URLs in the address bar. You usually type the URLs like login.salesforce.com. I'll go up with this URL. I'll type in the browser like login.salesforce.com. This is my actually login window. And how could I access this? This I can access just like any another website. Any another website you access. How would you access it? You go to the address bar and you type the URL over there, and you probably access it. You probably access it. That's it. So this is how I access my my Salesforce instance, probably my Salesforce application.
So this is one of the application, Align Talent Acquisition. It's a one of the application. How could I access this? I just type my URL and I type, I give the username and the passwords, whatever the authentication is there, whatever the required authentication. I just give entire parameters and I'm in. That's it. That's it. So now see here, I could access everything, whatever my application provides me. These are the things my application. I'm not just talking about. I mean, right now we are not just talking about this, but yeah, later on in the training you are going to learn each and everything. I'm just here. Right now what I'm doing is that I'm just proposing you all this thing. I'm just showing you one of the demonstration. So my application have all these tabs. My application have all these features. Do I have installed this? This is this running from my computer, my laptop? Answer is no. This is not running from my computer. This I'm accessing. If I click on the document, see, it's going to be loaded. Why? Because it's actually be loading from the server. If I click on the report, it's going to be loaded. See, it's the component. What I could see over here is being loaded somewhere from the server. That means I'm accessing it. I'm accessing all this application and every feature of the application. What is there present inside this particular application, Align Talent Acquisition. So I'm accessing each and every feature with what? With a browser. With an internet, I'm having this. If I don't have internet, I could probably not access this. So this is the kind of application which you call this to be a cloud application. And what is the major difference between a cloud and on-premise? The major difference is that, for every on-premise application, it actually requires you to first install it. Only in that case, if you don't install it, you probably cannot use that application. On the other hand, the cloud doesn't require installation. If I wanted to access any on-demand, any cloud application, I just require to have a browser and an internet. And inside the browser, I just need to type the URL. And that's it. I'm into that application. I could access that application. So now see, this is a demanding technology. This is something which is outdated because it has so many drawbacks, And we are going to, list out few. We are going to have a discussion on the few of the drawbacks. But few of them, there are so many drawbacks. There are so many drawbacks with the on-premise application, and that is why. What is the replacing technology? The replacing technology is the cloud application. This is what the demanding. The cloud is something which is future. On-demand is not the future. On-demand is something which is going to be outdated. और ये हो चुका है. ठीक है अभी धीरे धीरे हो रहा है हमारे यहाँ पे because probably we are still on the on-premise technology. But yes, there will be a day come when there will stand only one technology and that is the cloud. And after even the pandemic, अभी तो ये बहुत लोगों ने realize कर लिया कि what is the importance to be have, what is the importance to be on the cloud. ये तो अभी कैसे सबने realize कर. So let's compare, let's have a comparative study between what are the drawbacks of the on-premise and see whatever the drawbacks I'm going to tell you, the drawbacks I'm going to propose you, the same going to be served as the advantages over here. Like, अभी कैसा ये comparative study जो मैं समझा रहा हूँ ना आपको, ये इस तरह से है कुछ कि जो drawback आप यहाँ बोलने वाले हैं ना, the drawback which actually you are going to see over here, it is one of the advantage of the on. Now, first of them, what was the first thing? It requires an installation, and it doesn't require an installation. This was the first thing of the comparative study. Now, the second thing, see, I could, probably have so many different kinds of devices. I could access my business application with the laptop or probably with the mobile phone. I could access my application with the mobile phone. I'm having this mobile phone. I could even access my business related application from the mobile phone. I could probably have a tablet for this. I could probably have a tablet for this. I could probably have. I could use a kind of laptop I'm having. I could install this application in the laptop. Rather, I have a desktop system. I have a desktop system where I could install the application and then I could run it. So if I talk about the application and if I need to install that application on various devices, that means I'm talking about the on-premise application. So devices could be so many of different types. Devices could be of so many different types. Device could be a mobile, could be a tablet, could be a laptop, could be a desktop, or some other kind of device. Probably I don't know. So device could be of different types. And if I wanted to install any application in the device, so I couldn't say that कि ये application जो मैंने बनाया है universally सब device पे चलता है. नहीं, ऐसा नहीं हो. Why? Because see, if I need to install, if I try to install an application on that kind of device, so we first need to see what is the hardware configuration of that device also. अभी on premise application पे जो भी ऐसा कोई application design करता है, if I am a programmer of Java,
And if I'm developing certain application, I first need to ask the client कि ये जो application है आप इसको कहाँ use करोगे? Because for the mobile, if actually if he told me that you need to develop something for the mobile, so the application, the kind of application which I'm going to develop for the mobile is entirely different from the desktop, is entirely different from the desktop. So if I'm developing an application, an on-premise application, I first of all need to see on what kind of device this application is going to be installed. If it's a mobile-based application, so mobile पे भी कैसे कि mobile even have so many different versions, so many of different form factors. Form factor मतलब उसमें कितना memory है, उसका कौन सा processor है, उसका screen size कितना है, right? Every mobile come up with a different form factor. Every have a different kind of the hardware configuration. So even mobile पर भी मैं ऐसा कह नहीं सकता कि the application which I am designing is going to be run on every application. नहीं, possible नहीं. Because mobile phone is still differs, tablet still differs. The form factors, the hardware configuration of tablet to tablet or mobile to mobile, it actually different. हाँ, अब ऐसा कोई application सोचो, if I have developed something for this desktop and the laptop. For example, let me ask just you one question कि अगर आप MS Office की बात करो, आप Oracle की बात करो, या फिर आप AutoCAD या फिर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर what you can install it on the laptop on the this desktop. You cannot install it on the mobile on the tab. Obviously नहीं कर सकते because mobile supports a separate kind of application. Mobiles have a separate kind of application. Tablet supports certain different kinds of application. And the application what you design to be run on this desktop or probably on the laptop is of a different kind. So if I am such a developer who's actually developing an on-premise application, first of all, I need to see that the application doesn't support all kind of devices. My on-premise application would restrict me to be develop in a certain environment. That's it. कि मैं जो application बना रहा हूँ, if I'm a Java developer, if I'm a .NET developer, I'm a PHP developer, if I'm that some other kind of code language, I'm a developer of that on-premise. Any example of on-premise language. So if I'm developing any application, I first need to see कि ये application कहाँ run होने वाला. I cannot make an application to be universally accepted by all kind of devices. It is not possible. It is not possible. But see, in case of on-cloud application, if I'm a cloud developer, what my application only requires a browser. My application is not going to be installed on a device. It only requires a browser. So if I develop a certain this kind of application, now see, this application actually requires to be loaded from the browser. And browsers are everywhere. If your mobile have the browser, this application is going to be loaded in the mobile also. Any version of mobile, any screen size, any RAM size, any processor. If your mobile have a browser, and you probably access the website from the browser, this application is also going to be loaded over here. If you can access, can you access it with a tablet? Again, answer is yes. Tablet even have the browser, you can access the application. Can I access it from the laptop? Yes, access. This presently, right now I'm showing it with my laptop. Can I access it with the desktop? Yes, also I can do that. So with the cloud, this is a facility, your application is actually kind of universal application. You can develop a certain application that could be run on any device. Now here we don't bother about the devices. What is the end user device? No, we actually don't bother. Why? Because our application is going to be run in the browser. If there is a browser, my application is run. If there is no browser, okay, in that case I could assume the application couldn't be run. But see, browsers are everywhere. That is how I started all this. Okay, browsers are everywhere. Every device have this. Every device have a browser. If you have a browser, your application is going to run over there also. ये एक advantage है आपको. ये यहाँ पर disadvantage, यहाँ पर advantage. Then some other things like upgradation issues. If you know about the Microsoft, first of all, Microsoft doesn't provide you anything as a free. आप चाहे Oracle लो, sorry, आप चाहे Microsoft का suite लो, Word Point, PowerPoint, जो कुछ भी. Yeah, if you go up with the operating system, अगर आप Windows 7, 10, whatever, so Microsoft doesn't have this concept. So moreover, एक और चीज यहाँ पे. So for example, probably you were using Microsoft Windows 7. Let's take this as an assumption, and you have a license copy of this. From the past 3 to 4 years, you were using the 7, and now you came to know about the Windows 10. And Windows 10, I mean, you actually have seen Windows 10 somewhere, and you got impressed, and you decided कि okay, चलो अभी मैं 7 का license है मेरे पास में. And for example, let's take this as an example, कि 2 महीने पहले ही आपने license को upgrade किया और Windows 7 है ना जो आपके पास था. And then you decided कि चलो अभी मैं काम करता हूँ कि Windows 10 ले लेता हूँ. I found it more user friendly and found it more like more feasible for my purpose.
तो आप ना माइक्रोसॉफ्ट को कॉन्टैक्ट करोगे एंड यू टेल देम कि रिसेंटली 2 months बैक आई हैव परचेज दिस लाइसेंस नाउ कैन आई गेट ऑन द सेम प्राइस कैन आई गेट दिस और प्रोबेबली यू डोंट आस्क मी फॉर एनी मनी बिकॉज जस्ट 2 months बैक आई हैव पेड यू समथिंग so Microsoft denied your it's not possible everything whatever Microsoft give you is chargeable if you want to upgrade yourself you need to pay the charge चलो अब विंडोज 10 आपने फिर नया खरीद लिया आपने जो पैसे लिए थे वो गए आपके पानी में गए एंड यू परचेज द विंडोज 10 after some times a new version of the Windows 10 comes out to be or rather a new application or rather some new upgrade has come so they again going to charge you अब जैसे कि आपका इसमें होता है if you purchase this antivirus है ना एंटीवायरस वगैरह आप लेते हो तो उसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन रहता है तो विद इन दैट 1 year every update is free okay fine I consider that but after 1 year what happens when the subscription has been subscription has been over you again need to pay them upgradation cost you again need to pay them the subscription extended cost that is what so here we have an issue of the upgradations but I'll tell you how we actually inside the Salesforce probably because on demand मैंने कहा ना कि जहां जहां मुझे इसका एग्जांपल लेना पड़ेगा I'll take the example of Salesforce तो Salesforce में कैसा ये अपग्रेडेशन इशू जो है वो सॉल्व होता है तो यहाँ सबसे पहली बात कि देयर इज नो सच इशू ऑफ द अपग्रेडेशन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अपग्रेडेड बाय डिफॉल्ट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट अपग्रेड भी हो जाएगा अपने आप अपग्रेड होगा एंड इट वोंट आस्क यू फॉर एनी मनी तो ये कैसे पॉसिबल है तो दैट इन प्रोस्पेक्टिव ऑफ द सेल्सफोर्स आई एम गोइंग टू टेल यू दैट है ना ये एक चीज मैं आपको सेल्सफोर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा थोड़ा सा आगे चल एंड देन द समथिंग रिलेटेड टू द बैकअप एंड रिकवरी आल्सो सी अगर आप ये अज्यूम करके चलो कि if as a businessman if as a businessman I have purchased one of the on-premise application to maintain my business like some kind of ERP solution I have purchased और मेरा मान के चलो कि I have a business where my entire data has been kept inside my laptop मेरा laptop के अंदर वो software installed है and I used to keep everything I used to keep everything with me अब something bad happens to my laptop something happens to my some sort of physical damage some sort of logical damage that has happened to my laptop so I lost everything I lost the data I lost the data of my business, and that is a very, very, I could tell it as a disaster of any business. Because see, the business requires a data, and if you have a data and if you lost it, it is same as lost a business also. So losing a data means losing your business, losing your clients, losing your customers, and losing the revenue what you get generate from there in the future. So data is essentially a very important thing. So if you maintain data at your end, you certainly also require to take the backup and the recoveries from your end. And that is why in the company they actually when this on-premise technologies we were working on this on-premise when we were working on the Javas and all that. So I mean the industry used to have their backup servers, industry used to have their recovery server because they know what is the importance of this data. The data shouldn't be lost at any cost. Data shouldn't be lost at any cost because data is everything. Data is everything inside a business. If you lost the data, you lost the business, and you're vanished, you're gone. आप खत्म हो गए. So this is what the importance. So here you are actually required to maintain all this. It's really your headache. I mean, आपका server अगर full हो गया तो you additionally required to purchase one more server just to have a backup. And if your business grows, fortunately, you have some more data. You again require to purchase more servers. Every time you create, you need to create the DSR server, disaster recovery centers. Everything is responsible by you. And if you lost it, it's again your responsibility. You need to take this stand. Okay, this was my mistake, and due to my mistake, I lost all. But when we ask for any cloud vendors, when we ask any cloud application, see any cloud application come up with a cloud vendor solution. There you have actually something called as EAS. I'll tell you what exactly is the meaning of EAS, infrastructure as a service. So, every cloud application promises you that your data is secured and your data is safe with us. And we have, multiple disaster, we have multiple backup servers, we even have the recovery servers. So if your data is lost from one server, we could provide it, within fraction of seconds, we could provide you from somewhere else. If the data is lost from second server also, at a time for the, data is lost from 2 servers, we have third server, we have 4, and we have, almost 16 to 17 disaster recovery centers where I could, provide you backup. Now see, how could you maintain that? How could even the big organizations like TCS and Infosys, they couldn't even promises you to maintain 16 to 17 backup rate. But see, on cloud, they actually have this replication. They maintain your data in more than 1 to 2 and 2 to 3 or 4 to 5 places. So that your business, your data, I mean, it couldn't be lost at any cost. There is no such possibility that you lost your data. There is no such possibility. Now, एक point जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं अभी,
वो भी थोड़ा सा आप समझ लो। आफ्टर दिस पेंडेमिक व्हाट रियली हैपेंस इज दैट क्लाउड क्यों एकदम से ऐसा ऊपर आ गया, इन व्हाई यू गाइस आर हियर एंड समहाउ यू केम टू नो अबाउट द सेल्सफोर्स प्रोबेबली, एंड देन यू अब मुझे नहीं पता आप लोग कैसे यहाँ पे आए हो, बट हाँ प्रोबेबली यू नो, और यू आप मुझसे सुन रहे हो कि क्लाउड है ना, अभी क्लाउड बहुत बूम पे, एंड हु इज द क्लाउड वेंडर जो सबसे ज्यादा इनके ऊपर है? सेल्सफोर्स इज वन ऑफ दैट। ऑल्दो देयर आर सो मेनी अदर वेंडर्स आते हैं ना, आप माइक्रोसॉफ्ट का अजूर भी पढ़ सकते थे आप चाहें तो, यू कुड गो अप विद अमेजॉन का AWS पे भी जा सकते थे, बट व्हाई यू आर हियर टू लर्न द सेल्सफोर्स? तो अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है थोड़ा सा आप होमवर्क कर सकते हो ना, यू कैन गूगल दिस, यू कैन गो टू द यूट्यूब एंड फाइंड आउट दिस। तो आपको एक चीज तो पता चलेगी कि अमंग द ऑल क्लाउड वेंडर सेल्सफोर्स एक ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहा है, एंड सेल्सफोर्स इज वन ऑफ द देम, हु इज द लीडर अमंग द क्लाउड सोसाइटी। क्लाउड की सोसाइटी में सेल्सफोर्स फिलहाल सबसे ऊपर है। माइक्रोसॉफ्ट भी है, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट सेल्सफोर्स के काफी पहले का कंपनी है। सेल्सफोर्स इज ऑलमोस्ट 21-22 ईयर्स बैक स्टार्टेड हुआ, 99 पे 1999 मार्च को स्टार्ट हुआ था। बट देन सेल्सफोर्स इज ग्रोथ सेल्सफोर्स की ग्रोथ बहुत अलग है, और आज की डेट में सेल्सफोर्स इन सबसे ऊपर है। सेल्सफोर्स के पास में किस तरह से सेल्सफोर्स क्यों सबसे आगे है, क्या वजह है ना, वाई कंपैरेटिवली टू द अजूर एंड द AWS आप सेल्सफोर्स पे क्यों आए हो, क्या रीजन है यार सेल्सफोर्स, ये भी अपन डिस्कशन करने वाले हैं ड्यूरिंग दिस डिस्कशन आल्सो। अभी ये डेमो सेशन में ना करीब करीब ये 2 दिनों में यही कवर होगा, एंड देन यू विल बी एबल टू टेक दिस कॉन्क्रीट डिसीजन कि व्हाई आई एम हियर, व्हाई आई एम स्टडिंग द सेल्सफोर्स। तो सी आफ्टर दिस पेंडेमिक अभी जो 2 साल से चल रहा है, तो कैसा हुआ कि एक चीज को आप समझो कि द पीपल दोज आर वर्किंग ऑन द जावा, द पीपल दोज आर वर्किंग ऑन दिस एनी काइंड ऑफ ऑन प्रीमाइज टेक्नोलॉजी, आई मीन द पीपल दोज वर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ .NET जावा या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या इस तरह का कोई भी इसमें थे, आई मीन द पीपल इवन फ्रॉम द मेन फ्रेम आल्सो, लेट मी टेल यू दैट हमारे पास में ट्रेनिंग के लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यानी हर एक कहना चाहिए कि डोमेन से लोग आते हैं। हमने पीपल यूज टू केम दोज हु आर इवन वर्किंग इन 12 इयर्स, जो आईटी में कोई कोई आईटी में 12-12 साल से टेस्टिंग पे था, देन ही फाउंड इट कि ठीक है अब इसके आगे ग्रोथ नहीं हो रहा है मेरा, है ना, तो इसके आगे चाहिए, तो फिर ही मेक अ रिसर्च एंड ही केम टू नो अबाउट द सेल्सफोर्स, एंड देन दे केम टू अस और दे टेल अस कि सर आई हैव इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 12 इयर्स ऑफ माय लाइफ इन दिस। तो मैं कहता ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, दिस यू हैव टेकन अ डिसीजन, यू रियलाइज कि आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, दैट इज व्हाई यू केम अप हियर। तो डोंट लुक एट योर पास्ट, जस्ट लुक इन द फॉरवर्ड, अभी सिर्फ आगे देखने का, पीछे नहीं देखने का। देन द पीपल यूज्ड टू केम फ्रॉम द मेन फ्रेम से लोग आते हैं, जावा से लोग आते हैं हमारे पास में, इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स भी आते हैं, कुछ लोग दे आर फ्रॉम द एजुकेशन डोमेन, वो आते हैं हमारे पास में, क्या आई वाज इनटू दिस पर्टिकुलर डोमेन फ्रॉम लास्ट दिस एंड ईयर, लेकिन अभी यहाँ ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो एवरीवन एक कॉमन रहता है सब में, एक चीज फैक्टर सब में कॉमन रहता है, एवरीवन ऑफ देम वांट्स टू ग्रो समथिंग, एवरीवन वांट्स टू हैव अ ग्रोथ इन देयर लाइफ, एंड दैट इज व्हाई दे केम अप टू अस। सम ऑफ द फ्रेशर्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दीज आर द स्मार्ट गाइस दोज हु हैव टेकन दिस डिसीजन अर्ली इन द लाइफ। क्योंकि कैसा है कि ना आप 10 साल 5 साल बाद वापस आ रहे हो तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन इफ यू स्टार्ट योर करियर जस्ट नाउ एंड यू स्टार्टेड विद द सेल्स फोर्स, तो कहीं ना आपकी लाइफ आगे बहुत ब्राइट है। तो इवन वी आल्सो फील कि चलो ये बंदा इज अ वेरी इंटेलिजेंट काइंड ऑफ पीपल, तो आई मीन ही हैज जस्ट स्टार्टेड हिज करियर एंड ही स्टार्टेड विद द सेल्स फोर्स। तो इस तरह से कैसा ना एक अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है हम लोगों को। बट एक चीज जो मैंने देखा वो सभी में एक चीज कॉमन थी, दे वांटेड टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ एंड दे वांटेड टू हैव अ सस्टेनेबल ग्रोथ, एंड दैट इज व्हाई दे कम अप टू दिस डिसीजन कि अभी अपने को सेल्स फोर्स करना है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आफ्टर दिस पेंडेमिक लेट मी टेल यू दिस क्या हो रहा है ना, वंस वो जब लास्ट ईयर प्रॉब्लम जब ये स्टार्ट हुआ था मार्च वगैरह से, जब लॉकडाउन लगना शुरू हुए थे ना, तो अभी एक उस वक्त तो इमीडिएटली शट डाउन हुआ, सब पीपल आई मीन दोज वर वर्किंग इन द पुणे मुंबई जो कहाँ पर भी था, तो दे यूज्ड टू कम बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस, को जो जहाँ से भी था वापस आ गया। एंड देन आफ्टर प्रॉब्लली 1.5 मंथ लगा कंपनी को रियलाइज करने के लिए अभी काम कैसा शुरू करेंगे अपन। तो देन दे स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम पे देखो एक चीज दिक्कत आप समझो, those who were on the on premise technology, ठीक है, अब ऑन प्रेमाइज में कैसा होता है, फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग ऑन जावा, ओके, लेट्स टेक दिस एज एन एग्जांपल, एंड द एंटायर जावा सूट द लाइसेंस कॉपी ऑफ जावा, जब मैं ऑफिस जाता था तो मेरे नोट पे मेरे कंप्यूटर पे वो सारा सूट इंस्टॉल किया गया था, ठीक है, जो भी कंप्यूटर मुझे अलॉट हुआ है जिस पर्टिकुलर नोट पे मैं काम करता हूँ, तो ऑन दैट पर्टिकुलर पीसी ऑन दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर द एंटायर लाइसेंस वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर वाज देयर। अब ये चीज अगर आपको घर पे काम करना है तो आपके एंड पे थोड़ी ना लाइसेंस परचेस किए जाएंगे, तो कंपनी को लिटरली क्या करना पड़ा कि दोज हुए वर्किंग ऑन द ऑन प्रीमाइस, तो उनको ना घर पे पार्सल करके वो कंप्यूटर वो लैपटॉप वो डेस्कटॉप जो भी था वो भिजवाने पड़े, जस्ट टू स्टार्ट है ना, जस्ट टू स्टार्ट द वर्किंग फ्रॉम द होम। क्यों? क्योंकि लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल किया गया है, अब इंस्टॉल किया गया है तो फिर उसको तो ऑब्वियसली उसी पे काम करना है ना। तो ये देखो कितनी दिक्कतें होंगी इसमें, आप सोचो ना कि यहाँ पे बात 10-15 एम्प्लॉय की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड,
लाखों लोगों के, लाखों कंपनियां जो आज भी ऑन प्रेमाइस पे थी, उनको अपने लाखों एम्प्लॉयज तक ये पहुंचाना पड़ा हो। कितना डिफिकल्ट रहा होगा ये। और इसके ये आज एक दो दिन की बात नहीं है, मतलब इसके लिए प्रोबेबली 1 महीना, 10 दिन लगे होंगे, 15 दिन लगे होंगे। वो दैट टाइम, उतना टाइम क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, लॉस हुआ। वो पर्टिकुलर कंपनी का बस लॉस हो, जितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता था वो 15 दिन, वो 20 दिन में वो बंदे काम करते अगर ऑफिस में, और वो जितना प्रोडक्टिविटी से काम निकालते थे, वो सारा शटडाउन हो गया। वो पूरा शटडाउन। क्यों? जस्ट ऑफ दिस ऑन प्रीमाइस टेक्नोलॉजी। एंड दे केम टू रियलाइज दिस कि ये अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वी शुड बी, वी शुड बी एक्चुअली इन अ पोजीशन टू हैंडल एवरी काइंड ऑफ पेंडेमिक, एवरी काइंड ऑफ डिजास्टर, वट एवर। तो अब माइग्रेशन चले। अब ऑन द अदर हैंड आप बात करो, जैसे हम लोग सेल्स फोर्स पे, हमारे साथ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप आ गए सेल्स फोर्स, आप अपने घर आ गए, बिकॉज वी वर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, वी वर ऑन टू दिस टेक्नोलॉजी। एंड जब मैं अपने कंपनी पे था, तब भी मैं ऐसे ही एक्सेस करता था। आई गो टू दिस ब्राउजर, आई टाइप द login.salesforce.com, आई पुट अप माय क्रेडेंशियल ओवर हियर, and I put up my credential, any of the credential, and then that's it. I put up my credential, I enter the passwords, I enter the password. जब मैं अपनी कंपनी पे हूँ, तो मैं ये कर रहा हूँ। ओके, आई एम डूइंग दिस इन माय कंपनी। व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन माय नोट, आई जस्ट गो टू द ब्राउजर, एंटर माय पासवर्ड एंड एक्सेस द एप्लीकेशन, दैट्स इट। ठीक है। मैं कंपनी शट डाउन हो गया, कंपनी बोला कि अभी काम नहीं करेगा इधर से, वी नीड टू गो टू बैक टू द होम, वी नीड टू हैव वर्क। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम था, तो मैंने अपना नोट लेके आया कि नहीं, आई ओपन माई लैपटॉप, द सेम थिंग, आई गो टू login.salesforce.com, आई एंटर माई क्रेडेंशियल, एंड आई एम इनटू दैट, आई एम इनटू द प्रोजेक्ट व्हिच आई वाज वर्किंग। तो यहाँ पे आप ये चीज को समझो कि मैं अपने लैपटॉप से भी काम करता हूँ, एंड जस्ट आई डोंट नीड टू, I actually don't require any kind of license software for this. So I can access it remotely from everywhere. तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है ना, एक बहुत बड़ा चेंज आया है अभी टेक्नोलॉजी कि द पीपल दोज हु वर नॉट इन द क्लाउड, है ना, दे वर एक्चुअली ऑन द ऑन प्रेमाइस, दे वर यूजिंग ऑन डिवाइस काइंड ऑफ एप्लीकेशन, इस टेक्नोलॉजी पे थे। नाउ दे स्टार्ट माइग्रेटिंग, दे स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम ऑन प्रेमाइस टू ऑन क्लाउड। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है रिसेंटली। ऐसा नहीं कि क्लाउड आज नहीं, क्लाउड इफ आई मीन आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट, क्लाउड आज से 20 साल पहले से है। इवन सेल्सफोर्स भी क्लाउड पे बाद में आया, क्लाउड उसके भी पहले। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये टर्म, दिस हैज बीन इन्वेंटेड 20 years बैक, 20 साल पहले से लोग। लेकिन ये ग्रेजुअली ग्रो हुआ, और अब ये बूम पे है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। तो पेंडेमिक के बाद में ना, द पीपल हैज रियलाइज, एक नॉर्मल इंसान को भी ये चीज समझ में आई है। तो टेक्नोलॉजी में जो लोग होते हैं वो तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, दे केम टू नो दिस कि इस तरह से नहीं आगे बढ़ा जा सकता, वी नीड टू माइग्रेट फ्रॉम ऑन प्रीमाइस टू दी क्लाउड। तो अभी मैं आपको एक बात बताऊं, 90%, 80% ऑफ द प्रोजेक्ट जो आज डेवलप हो रहे हैं ना, दे आर द माइग्रेशन। आउट ऑफ एवरी 10 प्रोजेक्ट अगर हम काम करते हैं, तो 7 प्रोजेक्ट्स आर जस्ट माइग्रेटिंग, यानी हम किसी और टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट को सेल्सफोर्स में लेके आ रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ एवरीवेयर। every company that that is working on the Salesforce, 70 to 80% of the project what we are doing right now is just a migration. We are migrating, we are converting that project from on premise to on cloud. We are converting it from Java to Salesforce, we are converting it from the .NET to Salesforce, we are converting it from any XYZ technology to the Salesforce. That is what is happening right now. और ये आने वाले 3-4 साल तक चलेगा, बिकॉज ये ऑन प्रीमाइस ये आज से 25 साल से था, और 25 years बैक इतना बड़ा एरिया था ये। अब ये इतनी बड़ी एरिया को सेल्सफोर्स से कवर करना, क्लाउड से कवर करना, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू टेक द टाइम। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन, दिस इज वन ऑफ द रीजन, ऐसे बहुत सारी रीजन हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन सेल्सफोर्स में आज इतनी डिमांड क्यों, क्योंकि इतना सारा काम पड़ा हुआ है, लोग करने के लिए बंदे नहीं। तो ये एक और रीजन है, आई मीन द डिसएडवांटेज ऑफ योर ऑन प्रीमाइस एंड द आई मीन द एडवांटेज ऑफ योर क्लाउड एप्लीकेशन। ये एक और वजह है, जो बहुत बड़ी वजह है, जो एकदम प्रैक्टिकल वजह आपको। Okay. So this was all differences between this. What do you mean by the on-premise and what does it mean by the cloud? What are the advantages, disadvantages? Whatever. So what is this concept, cloud computing? Let's talk about the definition. One line definition. Cloud computing is actually a kind of approach. Cloud computing is a kind of technology. ये एक technology है, and that provides you everything, whatever you require. It provides you every kind of IT resource. IT resources क्या क्या हो सकते हैं? Softwares हो सकता है. What does an IT firm could give you? अगर आप उसको पैसा देते हो, तो what in returns to that, what could it give you? It could give you any kind of application. It could give you any kind of software. या फिर आपको कुछ आपकी वेबसाइट को होस्ट करना है, तो उसके लिए आपको सर्वर की स्पेस चाहिए, तो इट कुड गिव यू सर्वर। इट कुड गिव यू डेटाबेस सर्वर, अगर आपको अपना डेटा होल्ड करना है ना, समवेयर यू नीड टू स्टोर द बिजनेस रिलेटेड डेटा, तो वो कहाँ से स्टोर करेंगे? तो दैट इज गोइंग टू बी स्टोर समवेयर इन द सर्वर्स।
then backup and recovery servers, then data, data recovery centers, all of this. So these are some kind of resources that an IT firm could provide you. IT can provide you software, IT can provide you, applications, hardware, software, servers, database servers. There's so many categories. These are what? These are some of the resources what we usually get with any IT firm. Now, in case of cloud computing, those who are the cloud vendor, those who call them to be the cloud vendor, जैसे कि Azure है, Microsoft है, जैसे कि Amazon है. And there are so many. See, I listed out so many cloud vendors over here, and we are going to talk about this. Even Oracle, Alibaba, GoDaddy, these are also the cloud vendors. So any cloud vendor, when they talk, when they say, जब वो collar tight करके बोलता है कि I am a cloud vendor, so the kind of IT resources, the kind of services that they provide you, everyone provide you on the rental basis. This is the main thing. This is the main difference between a normal on-premise technology and a cloud technology. Whatever you get in the cloud, you get it on the rental basis. And the kind of license you purchase, it's not the user license. Actually, I could tell that it's a rental-based license. It's a rental license. अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है? आप सोच रहे हैं कि इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो मैं आपको एक दो रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसी चीज को रेंटल करना और किसी चीज को खरीदने में कितना फर्क है। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांटेड टू, अभी बारिश हो रही है, आपको कहीं जाना है ना, तो आप बोलेंगे यार मैं बाइक से जाऊंगा तो मैं भीग जाऊंगा ऑब्वियसली, तो फिर मैंने कार से जाना चाहिए। तो क्या इसके लिए आप कार खरीदने चले जाओगे, या फिर आप शोरूम में जाके नई कार उठा के ला लोगे? आप नई कार ला लोगे, आपको 10 लाख रुपए लगेगा। आप ओला से उबर से कैब बुक करोगे, आपको 100 रुपए लगेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेंटलिंग अ कार एंड परचेसिंग अ कार। आप एक शहर से दूसरे, अभी आपने सेल्सफोर्स कंप्लीट कर लिया, आपको जॉब लग गया बैंगलोर पे, पूना पे, हैदराबाद, तो यू गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। अभी तो जाना नहीं है, खैर 1 1.5 साल तो कहीं नहीं जाना है, बस अभी वर्क फ्रॉम होम ऑलमोस्ट एक्सटेंड हो गया है अभी। सभी को, जितने भी एमएनसीज हैं, प्रोबेबली हम सबको मेल आ गया है। एंड वी इवन इन द आवर कम्युनिटी आल्सो वी डिस्कस दिस, टू वी केम टू नो कि अभी तो ये इस साल तक था ही, 31 दिसंबर तक था ही, अगले मार्च अप्रैल तक का भी मेल आया हुआ है कई लोगों। एंड इज गोइंग टू बी एक्सटेंडेड द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। चलो ठीक है, ये अलग बात है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप गए, आप बैंगलोर गए, आपके अब आपने रहना है, तो आप फ्लैट रेंट करोगे या फिर फ्लैट ही खरीद लोगे? आपके पास पैसे, खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कंपैरेटिव स्टडी में देना चाहता हूँ। इवन यार, आई हैव सीन दिस इन द दिल्ली ना, वहां पे तो कैब छोड़ो, आपका तो बाइक भी बुकिंग होती है। आप उबर से को ओला से आप बाइक बुक कर लो, इफ यू आर अलोन अ पर्सन एंड यू वांटेड टू ट्रेवल। अब वहाँ कैसा ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, इफ यू बुक अ कैब यू विल रिक्वायर, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो आप बाइक बुक कर लो, आप अकेले ट्रेवल करना है तो वो जल्दी पहुंच जाते हो आप जहाँ। तो रेंटलिंग समथिंग इज एक्चुअली लेसर इन अमाउंट। आप वो बहुत रीजनेबल रहता है, आपकी जेब को ज्यादा पैसा नहीं लगता उसमें। That's this same approach. If I purchase a software, so on premise में हम लाइसेंस परचेस करते हैं, एप्लीकेशन परचेस करते हैं, सर्वर्स परचेस करते हैं, डेडिकेटेड सर्वर जिसको बोला जाता है, तो बहुत पैसा लगेगा। तो ये टेक्नोलॉजी ना, ये पॉसिबल है सिर्फ, अभी मान के चलो कि फॉर एग्जांपल आई एम एंटरप्रेन्योर एंड आई हैव अ बिजनेस, मेरा फार्मेसी का ही बिजनेस है, जैसा आपने वो देखा होगा, ये क्या है वो मेड प्लस करके ना, अपने यहाँ पे काफी जगह पर मेड प्लस है, काफी अलग अलग शहरों में मेड प्लस है। फॉर एग्जाम्पल आई एम द ओनर ऑफ दैट, एक जस्ट एग्जाम्पल। तो और मेरा ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, अलग अलग शहरों में, एक शहरों में भी 10 10 20 20 ब्रांचेस हैं। आई वांटेड टू मेंटेन माय डेटा, मुझे अपना डेटा जो है इस बिजनेस को मेंटेन करने के लिए आई वांटेड टू हैव एन एप्लीकेशन। तो अगर मैं ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन यूज करूंगा, तो आई नीड टू परचेज द लाइसेंसिंग कॉस्ट, हर जगह लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ओवर जितने नंबर ऑफ द लैपटॉप्स हैं, उतने नंबर ऑफ द लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये भी एक दिक्कत है यहाँ। ठीक है, अगर वही चीज मैं एक क्लाउड फर्म के पास जाता हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद दिस टेक्नोलॉजी, इफ आई गो विद दिस टेक्नोलॉजी, तो मेरे को फायदा क्या मिलता है? सबसे पहले यहाँ यहाँ का लाइसेंसिंग कॉस्ट और यहाँ की लाइसेंसिंग कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। वाई? बिकॉज हियर एक्चुअली आई नीड टू बाय द बायर्स लाइसेंस, पूरा खरीदना पड़ेगा, उसका लाइसेंस पे करो। यहाँ पे आपको रेंटल लाइसेंस पे करना। तो ये उतना ही फर्क है जितना एक कार खरीदने में और एक कार को कैब से बुक करने में जितना फर्क आता है कोई ऐप से, ये उतना ही बड़ा डिफरेंस है। तो व्हेन यू डिमांड फॉर एनी काइंड ऑफ आईटी रिसोर्सेज ऑन द रेंटल बेसिस, if you demand a software, you demand an application, you demand some kind of hardware, you can demand some kind of server, and you ask it on the rental basis, तो rental basis का cost जो होता है ना, drastically कम होता है as compared to your on premise. This is one of the major difference, and this is again a reason why cloud computing is spreading all over the world. देखो, आप सोचो, जहां पर आपको 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्टअप, इफ यू आर प्लानिंग टू हैव, आई मीन इफ यू आर प्लानिंग टू, मैं एक कंपनी डालूं, जस्ट टू ओन अ स्टार्टअप, आप ऑन प्रीमाइस पे जाएंगे, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ जाएगा, एंड यू कुड नॉट हैंडल दैट। ना, if you don't have that much of capital investment, you obviously this is not going to help that, तो फिर आप कैसा करो? then you go for this cloud. So with the help of cloud, with the help of cloud, एकदम से एक रेवोल्यूशन आया था टेक्नोलॉजी में। what was that?
Even the people, those who have having a little bit of the investment, they are holding this little bit of amount in their pocket, they can still access the license copy of the IT resource. पहले क्या होता था, ओपन सोर्सेस बहुत चलते थे जब ये ऑन प्रीमाइस होता था ना, तो क्या सबके बस की बात नहीं थी लाइसेंस लेना. License copy of operating system, license copy of database like Oracle SQL, license copy of the kind of application, सबके बस की बात नहीं होती. तो ओपन सोर्स नाम का एक कंसेप्ट चलता था. तो ओपन सोर्स में क्या होता है कि यू कैन इंस्टॉल एनीथिंग ऑन योर कंप्यूटर, बट फिर उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है, सिक्योरिटी. बिकॉज सी वी नेवर नो कि व्हाट इज देयर रनिंग इन द बैक एंड ऑफ द स्क्रिप्ट के बैक एंड पे क्या चल रहा है. आपने कोई ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड किया ओपन सोर्स का, और उसके बैक एंड पे कुछ तो भी हैकेबल कंपोनेंट है, तो वो आपके क्रेडेंशियल्स को बाईपास हो गया, वो पर्टिकुलर हैकर को चला गया, यू नेवर नो दिस, नाउ दैट पर्सन कुड इजीली हैक समथिंग, है ना. इट कुड हार्म योर डेटा, इट कुड स्टील योर information, your confidential information of your, probably your financials, probably your business, so they can steal that. Just a second. Yes, so what I was saying. हाँ, तो है ना, ओपन सोर्स इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या था, ओपन सोर्स. लेकिन ओपन सोर्स के साथ में ना फिर बहुत दिक्कत है. सबसे बड़ा जो था ना वो थ्रेट, सबसे बड़ा ये थ्रेट था कि आप हैक हो जाओ, और वो बहुत होता भी था ऐसे. सो आफ्टर द क्लाउड कंप्यूटिंग कम इनटू द एग्जिस्टिंग, ये चीज पूरा ही बदल गया. नाउ एवरीवन विद दैट, विद हैविंग अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, यू कुड डिमांड फॉर द लाइसेंस कॉपी ऑफ आईटी रिसोर्सेज. क्यों? बिकॉज यू जस्ट नीड टू पे द रेंटल अमाउंट. ये सबसे बड़ा डिफरेंस. तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है दैट कुड प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ आईटी रिसोर्सेज ऑन अ लोअर कॉस्ट. व्हाई? Because the kind of license what you ask over here, the kind of license what you ask over here is the rental license, probably for 1 year, or for 2 years, for 5 years, whatever. It all depends, it all depends on your business and what are the kind of agreement you are making with your cloud vendor. बट सी अगेन, आप कितना भी बोलो, आपको रेंटल का अमाउंट और एक्चुअल लाइसेंस परचेस करने का अमाउंट में ना बहुत फर्क. तो दिस वाज अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द टेक्नोलॉजी. आईटी में ये बहुत बड़ा चेंज हुआ तब जब क्लाउड कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस हुआ. उसकी वजह से आईटी बहुत स्प्रेड हुआ, लोगों ने स्टार्टअप शुरू करे, स्टार्टअप कन्वर्ट हुआ मिड लेवल कंपनी, मिड लेवल कन्वर्ट हुआ बड़े फर्म्स में, जायंट फर्म्स में. तो ये आज जो इतना, मतलब आज इंडिया में इतना आईटी ग्रो हुआ, आज ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना आईटी ग्रो हुआ, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि पीपल यूज टू थिंक अबाउट इट. कैसे? आप क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाओ. तो विद अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट इवन यू कुड स्टार्ट अप, 2 से 3 कंप्यूटर लेके, आप 2-4 बंदे अच्छे प्रोग्रामर हो आप, है ना, यू हैव अ ड्रीम टू बिल्ड अप योर ओन कंपनी, यू कुड वर्क विद द क्लाउड कंप्यूटिंग. तो ये ऐसा देखो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह से स्टार्ट किया था. इवन सेल्सफोर्स वाज स्टार्टेड लाइक दिस ओनली. सेल्सफोर्स एक फ्लैट पे 4 लोगों से स्टार्ट हुआ था. आज सेल्सफोर्स बहुत बड़ा कंपनी. इन्फोसिस इन द इंडिया वाज स्टार्टेड लाइक दिस. यू नो इन्फोसिस भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ था इंडिया में. ये चीजें हैं, देखो ये चीजें हैं. दिस वाज अ वेरी रेवोल्यूशनरी चेंज. ऐसा है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज. अब जब हम क्लाउड पे एंटर कर ही गए हैं, तो अभी ऐसा है कि अब ये एक समंदर है. वी नीड टू एक्सट्रैक्ट, जहां भी आप हाथ डालोगे कुछ ना कुछ निकल के बाहर आना ही आना है. तो द काइंड ऑफ क्लाउड सर्विसेज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विस. अभी ये टर्म अगर आप गूगल करने जाओगे ना, तो आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी. And people also, my candidate also used to tell me, sir, I found something called as SaaS, SaaS. I found something called as IaaS. Okay. So I told to them, okay, yes, I agree with that fact that there are so many different kinds of the cloud services. Now see, all of them, if you actually, bring up the services, there are 3 major kinds of services. Even the SaaS is also, SaaS, जब मुझे किसी ने बताया कि SaaS is any, SaaS something perform what, uh, X was something like any kind of service. तो मैंने कहा कि it's actually a combination of your SaaS, PaaS and IaaS. इसके अलावा कुछ नहीं. So if you Google this term, the kind of services offered by the cloud, the kind of services offered by the cloud, तो उसमें काफी सारी चीजें निकल के आती. But majorly, I'll tell you, majorly there are 3 different kinds of cloud services. There are so many cloud vendors. See, there are so many cloud vendors. Amazon is one of them. Salesforce, Microsoft, IBM. These many are the cloud vendors. Again, there are so many. अब ये list बहुत लंबी है. There are thousands of the people. There are thousands of the company
those who are into the cloud business, है ना, and they call themselves to the cloud vendor. मैंने कुछ ऐसे नाम रखे यहाँ पे जो कुछ बड़े नाम है, जिसको आइडेंटिफाई करने में शायद आपको भी मतलब दिक्कत ना हो. Probably you guys all have heard about the Amazon, Microsoft, and IBM, Salesforce में अभी आप हैं, Oracle, Alibaba, GoDaddy, VMware, Citrix, Adobe, Navisite. So these are some of the popular names probably you have heard. इसलिए उनके नाम लिखे. Otherwise, there are so many. There are thousands of the cloud vendors. ठीक है. Now, cloud vendors, what kind of service they provide? They provide you cloud services. Every cloud vendor, what they provide? They provide you service. What kind of service? Cloud service. So the major category of the cloud service, there are three different kinds of cloud services: SaaS, PaaS, and IaaS. What is the full form of SaaS? Software as a service. What is the full form of PaaS? Platform as a service. And what is the full form of IaaS? Infrastructure as a service. Okay. I'll tell you, we are going to have a detailed discussion on this, but just to make the introduction of this. So we have three different kinds of services. The cloud offers you three different kinds of services: software as a service, platform as a service, and then infrastructure as a service. Majorly there are three different kinds of service. अगर इसके categorization पे जाएंगे ना अपन, then there are so many different kinds of services. अब इसके within में बहुत आता है. But at the top of umbrella, at the top of the umbrella, these are the three services: SaaS, software as a service, then PaaS, platform as a service, and the IaaS, that is infrastructure as a service. Now, see, I actually require to have a detailed discussion on that. I actually require a detailed discussion. I'm going to take this. Don't worry, I'm going to take this. What exactly is the SaaS? What is the PaaS and what is the IaaS? So actually, we are going to have a detailed discussion. So अभी कैसा मैं थोड़ा सा skip करके आगे बढ़ता हूँ, because I know there's a point where actually I need to elaborate this. On every aspect I need to elaborate you what is SaaS, how Salesforce provide you SaaS, what exactly is the PaaS, how Salesforce provide you PaaS, what is IaaS and how Salesforce provide you. So I know that I have to take this decision. This discussion we are going to take. So right now what I'm going to do is that I'm just skipping this with a single point that although there are so many different cloud vendors, let me tell you that not every one of you can provide you this apart from the Salesforce. That means Salesforce is the only cloud vendor. Salesforce is the only cloud vendor that could provide you SaaS, provide you PaaS, and provide you IaaS. Salesforce is the only cloud vendor that provides all three different kinds of cloud solutions. Salesforce provide you SaaS, Salesforce provide you PaaS, and Salesforce provide you IaaS also. So Salesforce is the only one among all others. Salesforce is the only one among all others which can provide you all three kind of cloud services. अगर मैं Amazon की बात करूँ, so Amazon into the SaaS and PaaS. Microsoft is again into SaaS and PaaS. IBM and the Oracle, they are purely into the IaaS only. They provide you only IaaS services. Alibaba provide you PaaS. एक मिनट. हाँ, Alibaba provide you PaaS. GoDaddy also provide you PaaS. Citrix, SaaS and PaaS. But apart from the Salesforce, no other is one, who can provide you all these things. Salesforce is the only cloud vendor. अभी हजारों रीजन है कि why Salesforce is popular among every cloud vendor. उसमें से एक रीजन ये आपको मैं दे रहा हूँ आज, कि वैसे तो बहुत सारे cloud vendors है, they have so many products with them. Amazon provide you AWS, Microsoft provide you Azure, Oracle also provide you something, IBM also provide you something. IBM, there's a product I just skipped, find service skip here. So there are some few popular products with every cloud vendor. Why Salesforce is that much popular? Because there are so many good reasons. One of them is that Salesforce is the only cloud vendor that could provide you SaaS, PaaS, and IaaS, software as a service, platform as a service, and infrastructure as a service. Okay, so see, by today probably I'm going to end up here, because this is a demo session. By tomorrow I'm going to start with what is SaaS PaaS, and then I'll explain you what is the CRM process. And then we have by tomorrow probably we are going to have a at-length discussion. So today is the day one, so I don't want to get imposed with so many terminologies. That is why I'm ending with this. Just few things I need to tell you, and that we are going to end this. See, what you are learning right now is a Salesforce Classic. What I'm going to talk you. Sachin have a different module in this. Sachin is going to explain you about the Lightning. What is my part in this training? My part is to teach you about the Salesforce Classic. Salesforce Classic usually have all these four modules. Salesforce Classic training usually have all these four modules: admin, development, integration, and deployment. Sorry. So now this is related to 1 hour actually. It's not going to in case this is not for your case. It's 1 hour training. I require all this.
because I'm going to conduct this on the weekends only. I have time in the weekends. Actually, I'm busy. I'm a little bit busy with another kinds of training, so I only have this timing on the Sundays and the Saturdays. So we are going to have this probably 2 to 3 hours per day. Saturday Sunday approximately मिला के 5 घंटा तो भी होना चाहिए. That is what I am estimated. So there, in this training you have to learn. You are going to learn 4 different modules: admin, development, integration, and the deployment. Then see, admin is purely and purely non-coding. Deployment is also non-coding, लेकिन ये सबसे आखिरी में आएगा. We are going to start with the admin. When you come into the training, everyone needs to start with this. Everyone needs to start with this like one. So we are going to start with the admin training. Admin is purely and purely non-coding. So people used to ask me, sir, I'm from a non-coding background and I'm from this background. I'm not a computer engineer. Probably I'm with this branch. Even I'm not an engineer. I'm from the BSc. I'm from MSc. I'm from MBA. I'm from BCom, commerce. So I'm from a non-coding background. So can I be accommodated inside this? So I tell yes, you have Salesforce in you. We have a provision that even you. वैसे तो डेवलपमेंट भी बहुत इजी है, लेट मी टेल यू दैट, लेकिन ये फैसला आप करोगे, मैं नहीं करूँगा. एडमिन इज समथिंग व्हिच इज प्योरली नॉन कोड. यू जस्ट डोंट रिक्वायर टू राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड ओवर हियर. तो ये पूरा मॉड्यूल जो है ना, ये पूरा मॉड्यूल नॉन कोडिंग. एंड इवन आफ्टर द एडमिन, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ सेल्सफोर्स इज दैट यू डोंट वांट टू कंप्लीट दिस ट्रेनिंग, जस्ट गो फॉर द एडमिन आल्सो. हाँ, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी कम रहेंगी, बट यस, आप एडमिन के बाद में भी यू कैन गो अप एंड टेक द इंटरव्यूज एंड गॉट सिलेक्टेड एज एन सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर. तो दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ सेल्सफोर्स, कि आप सेल्सफोर्स में अगर सिर्फ एडमिन पार्ट भी करते हो, देन यू आर आल्सो लायबल टू हैव दिस. और हम लोग भी यही करते हैं कि व्हाट वी स्टार्ट आफ्टर द एडमिन इज ओवर, वी स्टार्ट टेकिंग द मॉक्स ऑन द एडमिन, वी प्रिपेयर यू फॉर द इंटरव्यूज एंड वी मेक योर resumes to be up, and then we got you the opportunities, and then you start giving the interviews of the admin. So I tell you this, from our experiences, what we are giving this training from past 3 to 4 years. So what our experience is that, out of every 10 candidates, 3 to 4 candidates got selected within, and I started the development. They are into the development and they got selected with the admin. So ये एक experience है हमको इस चीज का, but the ratio is 30 to 40%. Let me tell you that, and be frankly, I'm very honest with this. Out of every 10, 3 to 4 candidates got selected. The rest of the people, that they need to complete the training. Once you complete the development, even if you don't go with the integration and development, you also get selected. ये एक बहुत बड़ी बात है सेल्स में, because there is huge demand. Demand इतना ज्यादा है कि सप्लाई हो ही नहीं पाता है. Demand इतना ज्यादा है. If you are an admin, if you complete the admin, if you are getting trained in the admin, there are chances to you get selected. अगर नहीं हो रहा है, just complete the development. 2 महीने और लगता है development को. Just complete the development, you definitely will get selected. Even you don't know the integration deployment. If you complete this package, the chances are 100 to 200%. ऐसा, ये तो 200% की गारंटी हो जाती है. Why? In the present scenario, I could tell. हाँ, आज से 2 साल बाद मैं क्या प्रॉमिस करूंगा पता नहीं, but at least right now I could promise you up to ऐसा ही. So this is what the content of the module. तो ये इतनी चीजें हैं इसमें. And course duration अभी ये आपके ऊपर लाइव नहीं होता, because for you this is not a duration. Saturday, अच्छा Saturday Sunday लिखा होगा, अब तो ठीक है. So approximately 3 to 4 months लगता है मेरे को ये पूरा complete करने के लिए. For the admin, I probably require 25 hours. तो 25 hours को आप डिवाइड करो तो एक approximately 10 सेशन इसमें लगते हैं मेरे को. उसके बाद में डेवलपमेंट प्रोसेस ज्यादा टाइम लगता है. तो देयर आई एक्चुअली रिक्वायर्ड टू राइट डाउन द कोर्स. थोड़ा समय लगता है, बट या 3 to 4 months approximately पूरा चलता है ये. What from my side, what I'm going to provide you is that, this notes, ये जो अभी टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारे notes I'm going to provide you. By today itself, I'm going to provide you. What you need to do is that, I already have created a drive for you guys. This is the Google Drive. I'm going to upload this session. अभी जो session ये record हो रहा है, I'm going to put up the recording over here. And जो notes हैं यहाँ पे, ये notes भी मैं share करूँगा आप लोगों से आज ही. तो अभी क्या करना है, after this session is over, you guys need to give me your email IDs. ठीक है, संकेत, दिव्या and Neetu, I found all these 3 guys. You guys need to post your email ID to me. I'm going to share this drive with you. ठीक है, ये आपको एक email आएगा. You will get this email from this SFDC training batch 201. है ना, you are going to get the email from this email ID. Invitation का email आएगा. Then you can access this. तो आपको एक तो ये चीज मिलती है, throughout the training you will get this notes, text note and the recorded videos. इसके अलावा मैं अपनी तरफ से भी नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, बट आफ्टर दैट कंफर्मेशन ऑफ योर एड, आप जब ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कर लेते हो, आप एडमिशंस वगैरह ले लेते हो, उसके बाद में वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग. अपार्ट फ्रॉम द ट्रेनिंग, वी हेल्प यू इन द सर्टिफिकेशन. वी प्रोवाइड यू एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर फॉर द सर्टिफिकेशन. एंड फॉर आवर कैंडिडेट 100% ऑफ द सर्टिफिकेशन हैज बीन डन. कोई ऐसा नहीं जिससे सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है.
वी हेल्प यू, ये तो मैंने आपको बताया कि फॉर द मॉक वी बिल्ट अप योर रेज्यूमे, वी टेक द इंटरव्यूज, वी एफएक्यूज, वी एक्चुअली टेक द मॉक्स, है ना। उसके बाद में प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन और पोस्ट प्लेसमेंट की अगर आपको कुछ जरूरत पड़ती है तो वो, तो वी एक्चुअली नेवर पुट यू डाउन इन एवरी एवरी केस। आपको जो कुछ भी लगता है थ्रू आउट द सेल्स फोर्स में आने के लिए, वी वो वी एक्चुअली गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट। तो हमारा जो मेन जो मोटो है ना, दैट इज नॉट जस्ट अ ट्रेनिंग। आपको मैं एक चीज बताना चाहूँ, नॉट फॉर द पब्लिसिटी, आई जस्ट वांटेड टू मेक यू श्योर कि आप जिस ट्रेनिंग पे आए हो, ये बिल्कुल भी पब्लिसिटी नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट्स अभी तक ट्रेनिंग पे आए हैं ना, सबके सब प्लेस्ड आउट हुए, कोई एक सिंगल कैंडिडेट भी नहीं है जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। और आप इसको चाहो तो कभी भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो हम लोगों से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर हैविंग द ऑफर लेटर्स, इवन इफ यू वांट आई कुड गिव द नंबर्स ऑफ द कैंडिडेट आल्सो, वो कोई इशू नहीं है। अगर आपको हमारे पे फेथ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये सेंटेंस मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये सेंटेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ सो दैट यू कम टू नो कि जिस ट्रेनिंग पे आप आ रहे हो उसका स्कोप कितना है। अगर आप इस वे से सोचोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप जिस ट्रेनिंग पे आ रहे हो ये आपको 3 महीने 4 महीने के अंदर में प्लेस्ड आउट कर सकती है आईटी में, वो भी एक अच्छे पैकेज के। So this is the weightage of this training. This is, you know, this is why you came to know. I mean, this is why you are entering into the sales world. तो ये कैसे डे वन से आपको भी क्लियर होना चाहिए, डे वन से आपको भी ये चीज मतलब आपके दिमाग में होना है। इसलिए ये पब्लिसिटी नहीं है, डोंट डोंट थिंक लाइक दैट, आपको ऐसा जरूरत भी नहीं है। लेट मी टेल यू दैट हम लोग इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि मतलब इस तरह की पब्लिसिटी हम लोग नहीं करते, कभी नहीं करते। इवन वी डोंट डू एनी सॉर्ट ऑफ पब्लिसिटी। जो हम लोग पढ़ाते हैं ना, जिस तरह की ट्रेनिंग हम देते हैं, वही हमारा पब्लिसिटी। वी ऑलवेज हैव अ माउथ पब्लिसिटी, लेट मी टेल यू दैट। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे आए, बट एक्चुअली वी नेवर हैव डन एनी सॉर्ट ऑफ पब्लिसिटी। जो लोग हमारे से सक्सेसफुल हुए उन्होंने ही हमारे पास नए बंदे भेजे कि यार आई मीन यू ट्रेन्ड अस एंड सो आई एम हियर राइट नाउ, जस्ट ट्रेन दिस गाय आल्सो, इज समबडी ऑफ मी, इज माय ब्रदर, इज माय बेस्ट फ्रेंड, इज समथिंग लाइक दैट। एंड वी स्टार्ट, यू नो, वी टेक इट इनटू द ट्रेनिंग, और फिर वो भी प्लेस आउट होता है। तो दिस इज द रियल वे, ये हमारा असल फैक्ट ये है। तो दिस इज ऑल आम, ये मेरी साइड से आपको इतना मिलेगा। आई एम गोइंग टू कवर द क्लासिक पार्ट, और जो आपका लाइटनिंग पार्ट है वो आपको सचिन लेने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, एंड इफ यू हैव समथिंग टू आस्क तो अपन डिस्कशन कर लेते हैं इस चीज पे।